आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT वैल्यू या जो कि फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं उसमें क्या क्या करेक्शन अप्लाई होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें 3 करेक्शन आते हैं, एक तो करेक्शन फॉर फील्ड प्रोसीजर, दूसरा करेक्शन फॉर ओवरबर्डन प्रेशर, तीसरा करेक्शन फॉर डायलेटेंसी। सो यदि जब हम ये डोनट हैमर को 750 mm हाइट से रिपीटेडली एनुअल पर फ्री फॉल करा करके जो स्प्लिट स्पून सैंपलर होगा, स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर, उसको 450 mm हम लोग ड्राइव करते हैं। तो उसमें 3 स्टेज में होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ फ्लोज रिक्वायर्ड टू ड्राइव 15 सेंटीमीटर इज निगलेक्टेड, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। एंड दिस 15 सेंटीमीटर, दिस N1 वैल्यू and this N2 value we consider as a SPT value here. So number of blows required to drive 15 centimeter and 15 centimeter, that is 30 centimeter, is known as N value. Now this N value का जो इसमें करेक्शन की से जरूरत होती है कि जो पूरा सिस्टम डोनट हैमर, ए रॉड, ए बोरवेल एंड देन जो स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर है, इन सब के एफिशिएंसी को लिया जाता है so that we can reach to the corrected value of N. तो जो इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है लगभग 30 to 60% होती है, इसलिए हम लोग करेक्टेड N60 जो कि करेक्टेड वैल्यू होती है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये डिपेंड करेगा एफिशिएंसी EH जो डोनट हैमर जो हम लोग यूज करते हैं तो उसकी क्या एफिशिएंसी है इनटू करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड सैंपलर, जो हम लोग स्टैंडर्ड सैंपलर लगा रहे हैं उसके लिए करेक्शन करते हैं। देन करेक्शन फॉर बोर होल, जो हम लोग बोर होल कर रहे हैं वो 100 mm का है, 150 mm का है, कितना है उसके ऊपर भी करेक्शन डिपेंड करेगा। एंड करेक्शन फॉर रॉड, जो हम लोग ये रॉड यूज कर रहे हैं उसके लेंथ के ऊपर में भी ये डिपेंड करता है कि एन वैल्यू कितना इफेक्ट डालेगा। तो करेक्शन फॉर रॉड एंड देन ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाई 0.60. Once we apply this correction, we get the value of N60 which is corrected for the field procedure. So जो डोनट हैमर है जिसका वेट 63.5 kg होता है, इसका वैल्यू जो एफिशिएंसी ऑफ हैमर है दिस इज जनरली 0.50 to 0.60. Somewhere it is 0.70 also when we are doing with the controlled mechanism, तो 0.70 तक जाता है, बट for all the field procedure purpose we can take from 0.50 to 0.60. बोरवेल डाया करेक्शन, हम बोरवेल का जो डाया होगा 65 to 115 रहेगा, इसकी वैल्यू होगी 1। ये जो 150 mm का जो हम लोग जनरल फील्ड में यूज करते हैं इसके लिए वैल्यू होती है 1.05। और जो सैंपलर करेक्शन फैक्टर है वो 1 ही रहेगा यदि हम लोग स्टैंडर्ड स्पून सैंपलर यूज कर रहे हैं, तो इट विल बी 1। एंड अदर नॉन स्टैंडर्ड सैंपलर्स आर नॉट रिकमेंडेड, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं ली जाती। यदि वो कोई नॉन स्टैंडर्ड लिया जा रहा है तो उसको फिर कैलिब्रेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। रॉड लेंथ करेक्शन फैक्टर, यदि डेप्थ ऑफ बोर होल फ्रॉम एनविल से 3 to 4 मीटर है तो करेक्शन लगेगा 0.75, 4 to 6 मीटर है तो 0.85 and 6 to 10 meter है तो it will be 0.95 and above 10 meter है तो this value will be 1. So once we know that N60 is EH into correction for standard rod, CS कह सकते हैं, सैंपलर CR, बोरवेल के CB, ऑब्जर्व वैल्यू into upon 0.60. When we place all this value into this formula, then we can get the N value as per the field procedure. Now correction of SPT value for overburden pressure. It has been observed जैसे हम लोग डेप्थ नीचे जाती है तो सेम सॉइल के लिए वैल्यू ऑफ N बढ़ते चले जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होगा सेम सॉइल के लिए
we go deeper, the value for will increase for the same density index. तो इसके लिए भी करेक्शन IS 2131 में ग्राफ दिया गया है कि इसका करेक्शन कैसे अप्लाइड किया जाता है। तो यदि हमारा डेप्थ बढ़ रहा है किसी भी डेप्थ पे, ये हमारा इफेक्टिव वर्टिकल ओवरबर्डन प्रेशर निकाल लेते हैं एंड देन करेक्शन एन वैल्यू, जो हम लोगों ने N60 वैल्यू निकाली है उसी में एक करेक्शन अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग कोई डेप्थ 9.15 मीटर है, 9.15 पे SPT कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू एन ऑब्जर्व कुछ आई, तो एन ऑब्जर्व 28 आ गई, तो हम लोग इसको पहले इफिशिएंसी के लिए कर लेंगे, देन व्हाट एवर वैल्यू वी गेट वी अप्लाई दिस करेक्शन say C, so whatever N60 value we get, with that we multiply with C, we get the N dash। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गामा इज 18.08 and depth is 9.15, so pressure will be effective vertical pressure will be gamma into H, so 18.08 into 9.15 and we can multiply and get the P. So this, so 18.08 into 9.15 meter into 9.15 meter, it has come 165.432 kilonewton per meter square. Then we can per meter square we can convert it into the kg per cm square. So if we convert in kg per cm square, it will become 1.68 kg per cm square. So from 1.68 we can take 1.68 will come somewhere here and we can have this value. So this will come about say 0.78. So we can apply this 0.78 into N60 value for the, if we apply the correction, if it is 28, it will become 24. So 0.78 into 24 will be the N dash, the corrected value for the overburden pressure. So 0.78 into N60 is 24, so 18.72, N dash is 18.72, say 19, N dash is 19 for the after correction of overburden pressure. So we applied two corrections, one is for the efficiency and field procedure के लिए और दूसरा for the overburden pressure. थर्ड है करेक्शन फॉर dilatancy, वो जो हमारा जो फील्ड इसका ओवरबर्डन प्रेशर का जो करेक्शन है, इट इज फॉर द कोहेजनलेस सॉइल, दिस इज फॉर द कोहेजनलेस सॉइल, इन केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल ओनली वी अप्लाई दिस ओवरबर्डन pressure and then due to dilatancy the value obtained in 3.64.1 shall be corrected for the dilatancy। तो इसका जब वाटर टेबल के नीचे हमारा सैंडी सिल्ट हो, फाइन सैंड एंड सिल्ट हो, तब एक करेक्शन अप्लाई होता है एंड बिलो द वाटर टेबल अप्लाई होता है। तो इसकी वैल्यू जो होगी दिस विल बी एन डबल डैश इज इक्वल टू, और जब हमारा ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन के बाद वैल्यू 15 से ज्यादा आनी चाहिए, ये 15 से लेस है तो नो करेक्शन इज अप्लाइड, तो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 15, तो 15 प्लस हाफ n dash corrected value minus 15 will be the correction for the dilatancy. We find it out found from the overburden pressure correction and 15 and then less the minus 15, then we get the correction for dilatancy. So here we can
see an example. Find out the corrected SPT N value. Given field N value is 15, depth is 6 meter below the ground level. Find sand with the trace mica. No water table was observed within this depth. Standard penetration test was performed with the standard split spoon sampler and hand up donut hammer. Bore diameter was 100 mm. तो इसका जो सॉयल है क्वेश्चनलेस है एंड जो इसका गामा सबमर्ज है दैट हैज कम 17.3. So we can find out what is the corrected value for the field procedure as well as the overburden pressure, and it will, since there is no water table, then correction for dilatancy will not be applied, and the value of N value is also 15. So because if it is equal or less than greater than 15, then only we can apply. So N60 we can find out. N60 is efficiency for donut hammer into sampler into rod into borehole into observed N value upon 0.60. So we can take EH 0.60 efficiency for donut hammer. Sampler का 1 होगा. Rod is 6 meter. So 3 to 6 meter का हमारा जो है 3 to 6 meter का हम लोग ने this will be in this range 0.85. So we can take 0.85. 0.85 for the rod, and borehole is 100 mm. So the value will be 1 because 150 kilo 1.05 है, इसके लिए value will be 1. Observed is 15 divided by 0.60. So it will be 0.85 into 0.85 into 15. So field procedure के बाद में this value has come 12.75 से 13. So this N60 has come this. Now we can find out what is for the overburden pressure. So C value will be gamma is 17.3. In this case 17.3 into height is 6. So 17.3 into 6. 17.3 into 6 equal to 103.8. 103.8 kilonewton per meter square. So we can convert it to 103. It will become 1.03 kg per cm square. So for 1.03 we can make the correction here. For 1.03 it will be somewhere here. So it will come less than 0.99, we can say 0.99. So this will be 0.99 into N60 is 13. So again it will become 13 into 0.99. So 12.87. Say again 13. So there is no correction required to apply for the overburden pressure, and since water table is not there, we should not apply the correction factor for dilatancy. So with this we have covered 3 correction which is required to be done in observed SPT value. Thank you.